Hello guys and welcome back to my channel The Forkful Feasts. Today we'll be making rasmalai cake, so let's get in the video. So these are the ingredients. We'll be using maida, baking powder, baking soda, essence, condensed milk, butter and baking soda. So let's start. So first 1.5 cup maida. Here goes in 1 tablespoon baking powder and half tablespoon baking soda and just sieve it. Sieving is most important. Now we'll be taking butter and we'll be adding condensed milk. So butter and condensed milk, 50 grams butter and 200 gram condensed milk I have used here for 1 kg sponge. I am making 1 kg sponge. Now beat it until it looks whitish. It makes sponge airy and fluffy. Here I have added rasmalai essence to it and gel food color rasmalai color, that is saffron yellow. Now I'll grease the tin. Before mixing wet and dry ingredients, it's most important to grease your tin and preheat your oven. So now I am preheating. I am making it in kadhai. So we'll be preheating approx for 8 to 9 minutes and preheat on medium flame. Now let's mix wet and dry ingredients. So here wet ingredients goes into dry ingredients and you'll be using cut and fold method. This sponge can stay for 3 to 4 days easily, as we are not using any milk, we are using condensed milk. So it can stay in fridge easily for 4 to 5 days. And now you have to use cut and fold method. And look how I am mixing the batter. It's most important, which makes the batter fluffy, airy, and we want a sponge to be airy and fluffy. Don't use beater. Yes, beater will not work here. Now try to remove maximum lumps, but don't waste much time in removing lumps, because it will just reduce the effect of soda which we have added. So now mix until maximum 5 minutes after you add drinking soda. Just put it in a tin. Put it in your baking tin, which is greased earlier only, and it goes in. Now tap the batter. We have to fill half only, otherwise it will come out of the tin or it will not get enough space. Now kadai is also preheated. Now I'll be keeping the container tin in kadai and just turn the flame on. So let's go now. After 20 to 25 minutes, mainly 25 minutes, you have to check the cake and it will be perfectly baked. Now you can see. So yeah, it's done. Now you can see how soft it is and quick demold. Literally quick demold. It's very hot right now, but see, you can see how soft it is, fluffy. And it's spongy, airy and perfect. Now I'll be making cream. I'm beating cream here. If you want how to make perfect cream, I'll give that video also. Now let's start layering. I'm using thread method here. I'm not using bread knife because I feel it is more convenient for me. But I think the people who are more into baking, I think they feel much easier. Now I'll cut this cake into 2 parts because I don't like much cream, so I'll be keeping it in 2 halves only. Now insert the thread in the cut which I have made. Now just cross it and pull. So you can see how I have done it, and now you can see how soft and airy our sponge has turned out. It's literally perfect. So yeah. So now just start with applying a little cream on our cardboard, cake board. Then keep first layer. Now soak it with rasmalai and here first I'm making the cream, rasmalai flavored cream. I'll be adding little bit of essence and yellow food color to this. Now mix and here now I am adding रसमलाई का रस जो होता है वो ऐड करो, अच्छे से उसको डालो, सोक करो. इसमें कंजूसी नहीं करनी, मैक्सिमम सोकिंग होनी चाहिए रसमलाई से. हाँ, ओवर सोक ऑब्वियसली नहीं करना है, बट यू कैन सी हाउ मच आई हैव
like soaked it, and because flavor जो भी mainly आएगा वो इसी से आएगा, so don't do कंजूसी here. So मैक्सिमम डालो अच्छे से. अब इसमें अप्लाई करो क्रीम जो हमने बनाई, रसमलाई इसेंस एंड रसमलाई का मतलब कलर जो लेमन येलो फूड कलर है वो. अब हम लेस क्रीम बना रहे हैं तो बहुत कम क्रीम मैंने लगाई है यहाँ पे. वैसे भी तो देख सकते हो, उसको स्प्रेड करो इवनली. आप चाहते हो तो आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन. नाउ अप्लाई. Now I'll be adding here I'm adding रसमलाई के जो बॉल्स होते हैं उसको ब्रेक करके. इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत फ्लेवर होता है उसमें. सो अगेन आप देख सकते हो मैंने पूरा अराउंड 1 kg के लिए 250 ग्राम रसमलाई पूरी इस केक में लगा दी है. जस्ट 2-3 बॉल्स लास्ट में रह गए थे, छोड़ के पूरा 250 ग्राम का जो भी रस आया, मैंने उनको बोला था एक्स्ट्रा रस देना, मेरे को बॉल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उन्होंने दिया था एंड मैंने पूरा उस केक में डाल दिया है 1 kg के केक में. सो या बेसिकली 1 kg के ऊपर ही होगा, बट हाँ. सो नाउ आई एम डूइंग दैट क्रम कोटिंग पार्ट. बस उसको पहले शेप देना है क्रीम से. आई एम ऑल्सो नॉट प्रो इन डिज़ाइनिंग, बट फ्लेवर्स जो फ्लेवर आएगा इससे जस्ट अमेजिंग. रसमलाई केक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीम इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्रीम नहीं लगाती जब हमको घर पे खाना होता है, बिकॉज इट्स नॉट गुड ऑल्सो. बट रसमलाई केक में बहुत कम क्रीम लगाते हैं ताकि वो लेयरिंग में जब रस सोख होगा ना, it tastes amazing. You can make Presley cheese cake also, so that milk cake types. So वो भी बहुत अच्छा लगता है. So आप देखो कितना से फिनिशिंग से मैंने किया है इसको. एंड या सो आप देखो कैसे पैलेट नाइफ पकड़ी है एंड उसको ऑब्जर्व करो. एवरीथिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन पे, आप जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से बनेगा वो. Now I'll be starting the designing part. अब मैंने बस सिंपल डिज़ाइन किया जो कि रसमलाई केक का होता है. बस मैंने अपने आइडिया से, नो रेफरेंस नथिंग, बस जो मन में आया आई जस्ट वेंट ऑन. एंड अब देख लो ऐसे पाइपिंग बैग जो है वो यूज़ किया है अच्छे से. एंड जो साइड्स है वहाँ पर मैंने कैसे अलग ही पूरा प्लेन नहीं किया है, बट मैं उसको एक डिज़ाइन देने वाली हूँ. सो या यहाँ पे मैंने बॉल्स रख दिए, पिस्ता रख दिया, एंड ये मैं बॉर्डर कर दिया है पूरा रोज़ पेटल्स से. आई होप ये अच्छा लगेगा. हाँ, सो ये पूरा कंप्लीट करके मैंने इसमें एक अलग ही ऐसे टेक्सचर टाइप दिया है इसके ऐसे थिकनेस पे जो उसका है. दो ये बेस्ट डिज़ाइन नहीं है, बट रेसिपी बहुत अच्छी है. लाइक आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे. बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनता है, नो फेल रेसिपी है, 100%. डू ट्राई इट एट योर होम. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.